Hello and welcome to A for Arsenal. My name is Daksh and welcome to another video on the channel. And I cannot believe I'm making a video on Tottenham. Well, to be honest, I made a video on Tottenham yesterday because I was so sure they're going to beat Fulham and they will be in the top four. And mujhe laga it will be a great time to talk about how Spurs are having a very underappreciated and underrated season. And वो fourth पे हैं and they're in the Champions League and Ange का first season है and Spurs को respect करो. And then they lost. They lost 3-0 to Fulham against a very well coached Marco Silva team जिन्होंने mid block में रख के Spurs को frustrate कर दिया था. Spurs still stay in fifth, Aston Villa are in fourth, and Man United are now hunting them as well. Now, Tottenham will be okay. That is what I want to say. Tottenham will be fine. They are a team which are in disarray sometimes. They are a team which underperforms sometimes. Spurs ही हो जाता है. And मैं as an Arsenal fan उनका हमेशा मजाक उड़ाऊंगा because I'm an Arsenal fan, but as a content creator I have to tell you about Spurs and what they're doing okay and why they will be fine. So, in this video, we're going to talk about the things great with Spurs and some minor concerns I might have with them. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कल्चर से. What is great about Spurs? Number one, culture. Now, कल्चर की अगर हम बात करें, क्या होता है कल्चर? कल्चर की अगर आप बात करो, अगर आप चेल्सी की बात करो, देखो एलीट विनिंग कल्चर, चैंपियंस लीग कल्चर, यूरोपियन हेरिटेज, रोमन इब्राहिमोविच, रूथलेसनेस, मैड्रिड मेंटालिटी, मॉन्स्टर मेंटालिटी एट लिवरपूल, मैन सिटी पे एक्सीलेंस, ये सब वगैरह बहुत सारे बज़वर्ड्स अटैच हो जाते हैं. बट व्हाट एग्जैक्टली इज कल्चर? At every institution there has to be a work of excellence, high performance, everything like that. Spurs में ये काफी टाइम तक, एटलीस्ट इन द रिसेंट पास्ट, बड़ा एब्सेंट रहा है. They've tried it with Pochettino, जो एक लॉन्ग टर्म कल्चर बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहे थे, but eventually did not achieve anything. They tried it with Mourinho and Conte, people who come from a winning culture, and they thought कि एक टॉप डाउन वहां से हम एक विनिंग कल्चर को आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर देंगे एंड प्लेयर्स में ये कैचअप हो जाएगा एंड प्लेयर्स विल टर्न इनटू विनिंग मॉन्स्टर्स, मेंटालिटी मॉन्स्टर्स. वो भी नहीं हुआ बिकॉज फंडामेंटली अगर आप किसी स्पर्स फैन से बात करो कि व्हाई दे आर स्पर्स फैंस, it's because Spurs have always been underdogs that punch above their weight and they give trouble to the big boys and they play exciting football. And that is the core of Tottenham. Play exciting football, be the underdogs and always overachieve. बट ये कल्चर काफी टाइम से स्पर्स में गायब हो गया था, स्पेशली इन द लास्ट टू मैनेजर्स. नाउ टॉटनहम का कल्चर बेस्ट नहीं है. एंज के आने से ये कैसे चेंज हुआ? अगर आप टैक्टिक्स हटा दो, फॉरवर्ड एग्रेसिव फुटबॉल वगैरह छोड़ दो, अगर आप एंज की सिर्फ बात करो, ही कम्स फ्रॉम अ वेरी विनिंग बैकग्राउंड. अगर आप लोगों को उनकी हिस्ट्री के बारे में पता, ही इज वन एट एवरी क्लब ही हैज बीन, एंड दैट्स बीन सेल्टिक, दैट्स बीन इन जापान, दैट्स बीन एवरीवेयर. ही हैज प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया. He has been a winning manager, so that winning requirement is satisfied. But at the core of it, he is somebody who is so convinced of his principles that he wants Spurs to play a particular way. And what is that way? He wants to play aggressive football. He wants to change the atmosphere in the dressing room. And सबसे बड़ी बात यही है कि कल्चर चेंज अगर स्पर्स में लाना था, आपको ड्रेसिंग रूम एटमोसफेयर चेंज करना था. बिकॉज कॉन्टे के साथ काफी टॉक्सिक हो गया था. अगर आप कॉन्टे की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने फायर होने से पहले, एंड you look at all the articles, you listen to all the players, the dressing room culture has been changed. Players love going to training. He is a person who has made Spurs a positive atmosphere, and a positive atmosphere is very important for the players to give it their all. अगर आप एंज की बात करो और प्लेयर्स की बात सुनो, ही इज़ अ मैन दैट इज़ फुल ऑफ इंटेग्रिटी. आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ही देख लीजिए. ही इज़ अ मैन हु डजंट ओनली स्पीक अबाउट टैक्टिक्स बट ऑल्सो अबाउट फैमिली वैल्यूज. एंड आप लोग माने या ना माने, मड्रिड फैंस को लगे ये क्या बात कर रहा है, चेल्सी फैंस को लगा ये थोड़ी होता है इंपॉर्टेंट. In English clubs who have historically or recently been struggling, you have to build them up from scratch. And these things are important because the second you lose all the ruthlessness and all that, Florentino Perez chala jayega, ya Roman Ibrahimovic chala jayega, and all these things. The second you lack all of these things, you have to rebuild these things. Chelsea भी यही कोशिश करेगी अभी to rebuild the club. एंड मैं ये नहीं कह रहा कि फैमिली वैल्यूज वगैरह, बट एटलीस्ट ड्रेसिंग रूम एटमोसफेयर इंप्रूव करना होगा.
फैंस एंड प्लेयर्स को एक साइड लाना होगा, ये सारी चीज़ें अभी चेल्सी में एब्सेंट है, जो एंज एक सिंगल हैंडेडली वापस लाया है। कल्चरल चेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल चाहिए, यू शुड रीड व्हाट डेजान कुलुसेव्स्की रोट इन हिज प्लेयर्स ट्रिब्यून आर्टिकल. He talked about how the dressing room atmosphere is something he will miss if he ever leaves Spurs. He talks about how much he loves going to training, and he loves how the human aspect at Spurs is so underrated, jahan pe players, staff, coaches, everyone who works at Spurs is happy and loves coming into work. ट्रॉफीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पर्स को ट्रॉफी ही जीतनी पड़ेगी रिकग्निशन के लिए, बट हर एक ट्रॉफी हॉल या फिर एक ट्रॉफी विनिंग टीम का फाउंडेशन इज कल्चर. चाहे ये मड्रिड मेंटालिटी हो, लिवरपूल वाली मॉन्स्टर मेंटालिटी हो, सिटी वाली एक्सेलेंस हो, या वॉट एवर आर्सेनल में आर्टेटा कर रहा है कोशिश, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कल्चर. एंड का सबसे अंडररेटेड एस्पेक्ट इज दैट ही इज बिल्डिंग अ विनिंग कल्चर एट टॉटनहम हॉटस्पर. एंज की बात करते करते वी हैव टू टॉक अबाउट द फैक्ट दैट कोचिंग एट स्पर्स इज ऑल्सो एट एन ऑल टाइम हाई. देखो, मोरिनियो एंड कॉन्टे टैक्टिकल मास्टर्स, जीनियसेस, विनर्स, ये सारी बातें 100%, बट दे वर जस्ट अ बैड फिट एट स्पर्स. एंज केम इन टू द प्रीमियर लीग एज अ रिलेटिव अननोन. मुझे याद है वो चेल्सी की लिस्ट पे थे, बट सारे चेल्सी फैंस ने बोल दिया था ये एंज पोस्टेकोग्लू कौन है, इसका नाम तो चोदले पोगलू भी रख दिया गया था. बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट अ लॉट ऑफ people when he came into Spurs thought ये अननोन मैनेजर आया है, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं, दिस guy is gonna go by Christmas और he will underachieve with Spurs, maybe he'll stay for 1 year and then इसकी कहानी भी खत्म हो जाएगी. Typical Spurs, they have recruited not a winning manager, not a well known manager, just somebody who is unknown. बट आपने देख लिया उनके आते ही क्या चेंज हो गया है. मैंने अभी कल्चर वाली बात बताई. सबसे बड़ा चेंज इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल इज दैट स्पर्स स्टार्टेड प्लेइंग अ वेरी यूनिक ब्रांड ऑफ फुटबॉल. एंड इसमें एक टीम थी जो काउंटर प्रेस हैवी करती थी, लाइक इट वाज अ हैवी काउंटर प्रेसिंग टीम, जो सारे लोग उनके आ जाते थे प्रेस में, फॉरवर्ड्स प्रेस करते थे, मिडफील्डर्स प्रेस करते थे, विंगर्स प्रेस करते थे. इट्स अ वेरी हैवी काउंटर प्रेसिंग टीम. उसी के साथ इनके दोनों फुल बैक्स इन्वर्ट करते हैं, एंड इनके जो मिडफील्डर्स है दे बिकम द प्राइमरी गोल स्कोरर्स. इसलिए आपको कभी कभी सार, बिसूमा, उडोगी, मैडिसन, सॉन, रिचार्लिसन, ब्रेनन जॉनसन, कुलिस, all these players are capable of scoring because the goals keep going around. एंड आप इस पे और कितने भी कैवियट्स डाल दो, हाई लाइन खेलते हैं, अग्रेसिव प्रेस करते हैं, हाफ स्पेसेस को डोमिनेट करते हैं, फास्ट फ्लूइड फुटबॉल खेलते हैं, इस सब की एक ही कॉमन थ्रेड है दैट एंज इज बिल्डिंग एन आइडेंटिटी एट स्पर्स. एन आइडेंटिटी इज अ वर्ड दैट सो मेनी क्लब्स आर क्रेविंग राइट नाउ. अगर आप टेन हाग कैट यूनाइटेड की बात करें, दे आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड एन आइडेंटिटी. अगर आप चेल्सी की बात करें विद अंडर पोचेटिनो, दे आर स्ट्रगलिंग टू मेंटेन एन आइडेंटिटी. अगर आप टॉटनहम की बात करें, दे हैव एन आइडेंटिटी, यू नो द वे टॉटनहम विल प्ले. एंड तीनों क्लब्स में इंजरीज हुई हैं, कई ऑफ कोर्स किसी क्लब में ज्यादा इंजरीज हुई हैं, किसी क्लब में कम इंजरीज हुई हैं, बट स्पर्स will keep playing their football no matter who is available, who is injured, or who is playing in that starting 11. And that is the great thing about Ange, because when you stick to your principles, जब आप एक particular identity से खेलते हो, उसका effect not only first team पे जाता है, but second team पे, आपकी youth teams पे, हर जगह जाता है. The players are convinced that you are convinced about your methods, and that in face of any adversity you will never let go of the way you play. एंज ने आते ही सबसे इंपॉर्टेंट बात एक कही थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, that we will get what we want. It will be a slow process. There will be suffering. But to get where we want, we will first have to build an identity. And Spurs versus Chelsea was the perfect display of identity. जहाँ पे after a red card, Spurs kept playing the way Spurs play. Of course, they lost that game. एंड काफ़ी लोगों को नाइव लगता है, मुझे इंक्लूडेड. आई थिंक कहीं ना कहीं आपको ट्विक्स करने चाहिए डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द गेम. बट दैट गेम हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन स्पर्स. अगर आप डेजन कुलिसेस्की का प्लेयर्स ट्रिब्यून आर्टिकल पढ़ें, बिकॉज द प्लेयर्स केम अवे प्राउड ऑफ दैट परफॉर्मेंस. द प्लेयर्स वर प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट दे केप्ट ऑन प्लेइंग द वे दे वांट. एंड एंज ने कहा था that even if we lose, we are going to lose on our own terms. And that is the sort of things that builds an identity in the team. So yes, of course, they lost that game. Sub bowling in naive tha, 3 points is all that matters. But when Spurs have their fit 11, it that identity will be the reason they will turn into one of the top teams in the league. There is a reason Spurs have drawn to Arsenal, beaten Liverpool. Chalo theek hai, dodgy circumstances the, but they played a really good game, I feel. They have beaten Man United.
They only lost to City by 1 goal. That's top 4 5 teams, right? And of course Chelsea से वो हार गए थे, but I think again exceptional circumstances. Red card हो गया था, मतलब end में they were playing that suicidal high line and everything. But with a fit full starting 11, I think on their day they can beat any team. Man City हो, Liverpool हो, United, Arsenal, Chelsea, किसी भी टीम को ये लोग हरा सकते हैं. एंड उस सब की कोर पे है टॉटनहम की आइडेंटिटी. ऑफ कोर्स जब आप प्रीमियर लीग की बात करते हैं तो आपको मनी की बात करनी पड़ेगी, एंड एंज के आने के बाद जो रिक्रूटमेंट करी है स्पर्स ने, इट्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल. वेल, इफ यू थिंक अबाउट इट, स्पर्स का ये सीजन काफी चैलेंजिंग था बिकॉज हैरी केन लेफ्ट फॉर अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग फी फॉर टॉटनहम. हैरी केन, ऑफ कोर्स आप लोग जानते हैं, इज वन ऑफ द प्रीमियर लीग्स ग्रेटेस्ट एवर स्ट्राइकर्स. ही वाज दिस क्लोज टू ब्रेकिंग एलन शेरर्स रिकॉर्ड. एंड वो मैं कहता हूँ कि अगर स्पर्स के अलावा वो किसी और टीम में जाते, ही वुड हैव बीन रेटेड हायर, उनका पीआर ज्यादा होता, एंड मोर इम्पोर्टेंटली ही वुड फिट इन एनी प्रीमियर लीग टीम. एनी प्रीमियर लीग टीम इफ दे टुक हैरी केन, ही वुड बी फैंटास्टिक. एंड उसका आपको दिख भी रहा है बुंडेसलीगा में, वेर ही इज हैविंग अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन despite his age. So the PL is defined by big money and Spurs are now no strangers to big money, to be honest. यहाँ पे FFP की पकड़ टाइट हो रही है. United are struggling, Arsenal are struggling, Newcastle are struggling, Chelsea is definitely struggling. A lot of teams are struggling. And Tottenham are one of the most financially shrewd teams in the Premier League, and that will help them in the long run. सबसे पहले अगर आप स्पर्स की बात करो, उनके पास एक लंदन एडवांटेज है. इट्स द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. One of the wealthiest people live in London, and as a result, उनका fan base, merchandise and match day के लिए they are willing to pay higher and higher prices. Spurs का revenue from match day and merchandise already बड़ा high है. इनफैक्ट अगर आप उनके स्टेडियम, जो नया स्टेडियम उन्होंने बनाया है, उसको अकाउंट करें, जहाँ पे मल्टीपल इवेंट्स आ रहे हैं, जहाँ पे डैनियल लीवी ने उसको एक मल्टीपर्पज स्टेडियम बना दिया इंस्टेड ऑफ अ फुटबॉल स्टेडियम, जो अब यूनाइटेड ट्राई करेगी, ये आर्सेनल अनसक्सेसफुली कर पाई है. स्पर्स विल एंड अप रेकिंग अ लॉट ऑफ मनी दैट विल हेल्प देम इन एफएफपी एज एफएफपी रूल्स गेट टाइटर, एज स्क्वाड कंट्रोल्स गेट टाइटर. स्पर्स आर फाइनेंशियली इन अ वेरी हेल्दी पोजीशन, एंड इफ यू लुक एट actual statistics, unka revenue is actually above Chelsea and Arsenal. In fact, they have been above Arsenal since 2019. For the last 5 years, Spurs have been a richer club than Arsenal. और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये गैप और भी वाइडन होता रहेगा जब स्पर्स चैंपियंस लीग रेगुलरली खेलेगी एंड आर्सेनल चैंपियंस लीग रेगुलरली खेलेगी, बिकॉज स्पर्स स्टेडियम गेट्स देम एक्स्ट्रा इनकम. स्पर्स स्टेडियम इज अ श्रूड इन्वेस्टमेंट, एंड स्पर्स का वेज बिल से लेके स्पर्स की एवरीथिंग इज जस्ट फिनोमिनली financially well set up for Spurs. Spurs this season have spent 270 million euros. Now, of course, इसमें से कुछ Harry Kane का पैसा भी था, but 270 million is a lot of money. But they were able to spend this money because of the stadium and because of that Harry Kane sale. They bought amazing players in Mickey Van der Ven, Vicario, Destiny Udogie, Brennan Johnson, Timo Werner on loan, James Madison. इसके अलावा they already had a great supporting cast of players in Pape Matar, in Bissouma, in Kulusevski, Pedro Porro भी है इनके पास, and all of these guys are led by Heung-min Son, one of the most lethal finishers in the Premier League, जिन्होंने केन के साथ एक इतनी अच्छी पार्टनरशिप बनाई थी. He's taken over the captaincy and he's leading this young group of players. Spurs in that way मैं कहता हूँ Arsenal से in the process is a little ahead because they have a world class player in Son. Arsenal had to let go of a lot of players and have to rebuild their team completely from scratch. Spurs के पास ये advantage है that Heung-min Son, a non-toxic player, a hard-working player, a committed player, and a great captain, is the one leading their team. उनकी striker situation is already almost solved. उनको midfield में चाहिए थे, उन्होंने recruit कर लिया. उनको defense में चाहिए थे, उन्होंने recruit कर लिया. Mickey Van de Ven, he'll turn out to be one of the top centre backs in the Premier League. Vicario, जब हम सोच रहे थे डेविड राया नहीं जाएंगे स्पर्स, तो स्पर्स क्या करेंगे क्योंकि लोरिस ओल्ड हो गए हैं. दे गॉट गियर्मो विकारियो फ्रॉम एम्पोली. नोबडी थॉट क्या होगा, बट ही हैज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द ग्रेट goalkeepers in the league this season. Pedro Porro, fantastic. Brennan Johnson, young है, but he will turn out to be a great player as well. Kulusevski को permanent कर लिया था. Kulusevski is a great playmaker. James Madison, एक underrated क्रिएटर थे लेस्टर के साथ. ही वॉज ऑफ कोर्स रेलीगेटेड, बट ही हैज शोन हिज क्वालिटी एट स्पर्स.
एंड यार आप हर जगह पिच पे देख लो, स्पर्स हैव क्वालिटी इन डेस्टिनी उडोगी एज वेल, ड्रागुशिन ऑफ कोर्स फुलम के अगेंस्ट उनका गेम अच्छा नहीं गया था. दे हैव द इंग्रेडिएंट्स टू बी अ टॉप टीम बिकॉज दे हैव रिक्रूटेड रियली रियली वेल. लूकस बर्गवाल, ऑफ कोर्स उनको फर्स्ट टीम का प्रॉमिस दिया गया है, बट ही चोज स्पर्स ओवर ट्रेडिशनल जायंट्स लाइक बार्सिलोना. नाउ ये जो रिक्रूटमेंट है स्पर्स की सिर्फ फर्स्ट टीम पे नहीं है. अगर आप उनकी यूथ टीम की भी कोचिंग देखो, स्पर्स की प्रीमियर लीग 2 टीम जो हम कहते हैं एक लेवल बिलो फर्स्ट टीम होती है, इट इज ऑन ट्रैक टू बी द टॉप टीम इन प्रीमियर लीग 2. ये एंज बॉल वाला जो है, ये रिक्रूटमेंट एट द यूथ लेवल जो है, ये यूथ डेवलपमेंट जो है, all of this is being led by Ange Ball, and Ange Ball is doing magic in Premier League 2 as well. So Spurs ki recruitment, Spurs ke finances have set them up absolutely perfectly for the next 4 5 years. This Spurs team, like I said, reminds me of Arsenal 2020 2021. It is an entertaining team. It is a young team. Inki average age, by the way, same as Arsenal. Unki first 11 ki average age is slightly higher, but that's just a very minor difference. But their average age is the same as Arsenal. It's a super young team. It's an inexperienced team led by an exciting manager, convinced of his principles, bringing in a cultural change. The Spurs are on their way up. उनकी यूथ टीम में काफ़ी अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं. एल्फी डिवीन है. They have the money to recruit top superstars, especially when they get into the Champions League. And I am telling you right now, they're comfortably the fourth best team in the league, behind City, Liverpool, and Arsenal. They're the fourth best team in the league. And they might not actually make the Champions League. Maybe they will have some bad results, but that's okay. Because this happens. Arteta in his first full season got eighth. Spurs are in the hunt for Champions League. They are already ahead of Arsenal जब Arsenal ने start किया था. And that has to do with some, of course, the squad they already have. कि Arsenal के पास एक aging declining squad था. Spurs still have a young exciting squad with a lot of money and led by Heung-min Son. They are also led by a manager with a lot more experience. So Spurs are ahead right now of schedule. So if they finish in the Champions League, it will be absolutely huge because the players that they are being linked with, Antonio Nusa, Gift Orban, all these players are fantastic young talents as well. And you just never really know. They might need another centre back, they might need another top striker. With Ange, his charisma, his mentality, and others players के रेफरेंसेस जैसे लूकस बर्गवाल में आई एम प्रीटी श्योर डेजान कुलुसेव्स्की का बहुत बड़ा हाथ था कन्विंस करने के लिए. When players and managers talk to these new upcoming talents or big names, I am sure Spurs will be there leading the line. Their finances above Arsenal and Chelsea. They are right now the eighth richest club in the world. Spurs are absolutely set up. Now, मेरे थोड़े से concerns हैं. I know video थोड़ा लंबा हो गया. I have a few concerns for Spurs. Number one, of course, the mentality. Sometimes that mental block exists. ये City में भी था until City won their first trophy, which was the Carabao Cup all those years back. जब तक स्पर्स ये अपना मेंटल ब्लॉक साफ नहीं करेगी ऑफ विनिंग अ ट्रॉफी, हमेशा उनके पास एक चीज रहेगी, कैन वी एक्चुअली क्रॉस द लाइन. दूसरी चीज, सिर्फ स्पर्स ही ऊपर नहीं प्रोग्रेस कर रही है, बाकी टीम्स भी प्रोग्रेस करेंगी. लिवरपूल में एडवर्ड्स वापस आ गए हैं, ही इज अ श्रूड ऑपरेटर. आर्सेनल एंड आर्टेटा are already on their way up and they have heavy momentum. Man City is Man City. Man United, they can switch it up like this anytime. They have the money, they have the history, they have the mentality. If this coach doesn't work, they can attract the top coaches of the world and they can switch it up like this. Same with Chelsea. A lot of history, a lot of money, ambitious owners. Maybe recruitment's a little up and down right now, but they can turn it up really well. And even in fact, they are also set up if their squad gels up properly as well. So this was my video on Spurs. Yeah, Spurs, मैंने जैसे कहा, in terms of money, in terms of recruitment, in terms of culture, in terms of coaching, in terms of all these things, Spurs are very well set up. ये Spurs team बड़ी exciting है. This Spurs team has a lot of mental blocks to go through. Of course, मैं tactics की बात नहीं कर रहा कि mid block इनको रोक सकता है, low blocks इनको रोक सकते हैं. एंज में शायद से प्लान ए इज डोमिनेंट एंड प्लान बी नहीं है, but that's also because the players he doesn't have right now. So if you're a Spurs fan, I'm sure you watched this video till the end. If you're another fan that you've watched this video till this point of time, first of all, I love you. Thank you so much for supporting the channel. Like the video if you haven't, subscribe if you're new, and I will see you all soon. Tata, bye bye.
And even though it's a Spurs video, come on, you Gunners. Bye bye.